Hello and welcome everyone to this channel for another YouTube session. So in today's video we'll discuss about the NORTH-EAST SLET 2023 that held on 19th March 2023. All the questions and all the answers that we'll discuss in this today's session. And the questions and the answers will be unofficial because the official answer key is yet to be provided by the SLET authority Assam. So in this video we'll discuss about the unofficial answer keys of paper 1, which is common for all subjects. So before we start, I have a request to make. Please, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe, like this video, and if you have any doubt or if you want to make me any correction, rectification, then you can just write on the comment section and I will do the necessary. So let's begin with the video with today's session. And before we start, let me clarify that this paper 1 is the series of this paper 1 is X. So you can just up mila sakte, like if what you have wrote like what you have given the answer in during your exam, so you can just compare with your answers. So let's begin with the session. First question was under new education policy 2020, the 10+2 structure of school curriculum is to be replaced by. So we all know that NEP 2020 brought a dramatic change in the education structure in school curriculum, also in our college curriculum, college structure. So the new education policy that suggested that the new structure 10+2 structure would be replaced with 5+3+3+4. So if you even didn't know the answer, then there was also a explanation given below the answer, that curriculum structure corresponding to age 3 to 8. So if you are smart enough, then you could just guess the right answer from this explanation that were provided in the question. So right answer would be 5+3+3+4. So this is the correct answer. Next question is, students differ greatly in their susceptibility to anger due to heredity, health status, environment, and the way they are dealt with by the adults. As a teacher, how will you try to direct attention of the student towards something else? So the right answer would be option C, that is, grown-up children should be taught a problem-solving behavior. They should be trained in such a manner that they can cope with any situation that provoke anger. Otherwise they will just get angry with anything. So they'll have to be trained in such a manner that they don't get offended easily, or they don't bend their anger just suddenly on anything. So they should be trained to control their or cope up with situation that provokes their anger. So the third question is, why should a student not be punished severely? एक स्टूडेंट को क्यों पनिश नहीं करना चाहिए बहुत ख़राब से? सो दिस इज़ ए कॉमन सेंस क्वेश्चन. दीज आर एक्चुअली फ्रॉम पेडागोजी. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. The student may develop a negative attitude towards his studies, teacher, and school. So if a student is if they are punished severely in a bad manner, then they will just hate their studies. They will grow negative attitude towards their studies, towards their teachers, towards the school even. So they should not be punished severely, because the environment of the atmosphere of the classroom should be in the favor of the student, because they should not be made to feel vulnerable at the classroom. Next question is, there are two sets given below. Set 1 specifies the types of research, while set 2 indicates their characters. So this question is from research and methodology. So research type, fundamental research, these are a very common thing, like fundamental research, applied research, action research, evaluative research. So the characteristics of these research are given, so we'll have to pick up the right answer. So
So the right answer would be from the codes. There are codes given below. So the right answer would be option A, that is this one is the right answer. So fundamental research is actually developing an explanation through theory building. Then B, applied research is actually exploring the possibility of a theory for use in various situations. Action research is actually improving an existing situation through use of intervention. Whenever we face any problem, then we do action research, like to solve any problem instantly. Evaluative research is finding out the extent of perceived impact of an intervention. So this is the right answer, option A. Next question, fifth question, is the Indian Institute of Science IISc, which is a premier institution of India, which ranks 1 generally in All India ranking, NIRF ranking. So this is actually in Bangalore. We all know that Karnataka in Bangalore. Then we have Indian Association for the Cultivation of Science. So this is actually in Kolkata, West Bengal. Then Bhandarkar Oriental Research Institute. This is actually in Pune, that is Maharashtra. And the last one, Central Institute of Himalayan Culture Studies. This is actually in Arunachal Pradesh. This is the right answer. So option C is the right answer. Next question, sixth question, a statistical measure based upon the entire population is called parameter, while measure based upon a sample is known as what? So the right answer would be option D, statistics. Statistic. This is the right answer. Next question is, the Man Who Knew Infinity is a 2015 British biographical drama. So it was actually a movie, and the actor was an Indian actor. I forgot his name actually. So this movie was based on the 1991 book of the same name, that is The Man Who Knew Infinity by Robert Kanigal. It was about whom? Who was the based on whom the book was written? So the right answer is option D, Indian mathematician Srinivas Ramanujan. So Ramanujan was the man based on whom the movie or the book was written. Next question is 1.2% of 5 liters. So the right answer is 60 cm cube. So let me show you the procedure. If you convert 5 liter into milliliter, then this turns out 5000 milliliter into 0.12. So the right answer would be 60 cm cube. Next question is, if A is to B is equal to 8 is to 15, B is to C is equal to 5 is to 8, C is to D is equal to 4 is to 5, then A is to D is. So right answer would be 4 into 15. Let me show you. So here it is, like A is to D हमको निकालना है. So A is to B means A by B into B by C into C by D. So यहाँ दिया हुआ है 815. Then B is to C is equal to B by C is equal to 5 is to 8, that is 5 by 2. Then C is to D is equal to 4 by 5. So 8, then 5. So 4 by 15 is remaining. 4 by 15, that means 4 is to 15. So this is the right answer. This would be A is to D. So right answer is option D. Next question is paragraph. So 10 to 14 paragraph number questions are from paragraph. So paragraph was one of the easiest, मतलब इतना easy नहीं देता है generally, but paragraph भी बहुत easy था. So the meaning of the word unit in the passage. So unit का meaning क्या था? मतलब घर.
इट वाज एक्चुअली घर. ए स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए क्वांटिटी, ये नहीं है क्वांटिटी यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इस पैराग्राफ में क्वांटिटी मीनिंग नहीं था. द नंबर 1 ये भी नहीं था. देन एन ऑर्गेनाइज ग्रुप कंप्राइजिंग पीपल एंड और इक्विपमेंट, ये भी नहीं था. राइट आंसर वुड बी ए सिंगल अपार्टमेंट इन ए बिगर बिल्डिंग. बड़ा बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट, छोटा अपार्टमेंट जो होता है ना, उसको यूनिट बोला गया इस पैराग्राफ में. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाजरिगा इज ए. सो बाजरिगा इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ पैरट. पैरट का एक ब्रीड है. तो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मॉल लॉन्ग टेल्ड सीड ईटिंग बर्ड ऑल्सो नोन एज द कॉमन पैराकिट और शेल पैराकिट. तो पैरट का एक टाइप है ये बाजरिगा, जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसका मेंशन है एक्चुअली. ये तो ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पेट डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप. Author what kind of pet he wanted to keep. If you want to read the paragraph, then you can just read it by pausing the video. It was actually very simple paragraph, so you can easily get the answers. Okay, so next question. So the right answer would be of question number 12 is he kept a shorebird. So Bajariga is a shorebird. Here it is written पेप्सी, जिसको वो पेप्सी बोलते हैं. पेप्सी इज ए शॉबर्ड. तो दिस इज द राइट आंसर, शॉबर्ड, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डिड पेप्सी फास्ट एग्जिबिट. तो कैसा एग्जिबिट किया उसने, पेप्सी ने, दैट मीन्स बाजरिगा बर्ड ने. ही वॉज एक्चुअली वेरी टिमिड एंड स्कैर्ड. ही वॉज वेरी स्कैर्ड एट फर्स्ट. सो इट वॉज ऑल्सो गिवन इन द पैराग्राफ, यू कैन फाइंड इट. So here it is written he was very timid and scared. So this is the right answer, timid and scared. Okay, next question was which of the following is correct about Pepsi. Pepsi के बारे में लिखा है 4 सेंटेंस, 4 ऑप्शंस. So which one of them are correct? So right answer would be he is an intelligent bird. So ये भी आप देख सकते हैं पैराग्राफ में, he is an intelligent, he is very intelligent. तो यही है राइट आंसर. Next question 15. So we are done with the paragraph questions. 15 question. Name the project which has connected all the police station of the country in one network with utmost secrecy from general people. So Polnet ये एक वेबसाइट है, डिजिटल डोमेन है, जहाँ ऑल द पुलिस स्टेशन का, सब पुलिस स्टेशन का कनेक्ट किया गया है. बट दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट completely finished yet, it's under process. So ये प्रोजेक्ट, मतलब इसका नाम दिया गया है Polnet. Next question is it refers to the praman of non-perception which consists in the presentative knowledge of negative facts. तो उपमा नहीं होगा, शब्द नहीं होगा, अर्थपट्टी नहीं होगा, ये अनुपलब्धि है. राइट आंसर वुड बी अनुपलब्धि. उपमान इज एक्चुअली नॉलेज गेन्ड बाय कंपेयरिंग ऑन एन अननोन ऑब्जेक्ट विथ ए नोन. मतलब कंपैरिजन से, रिलेशन से आप उसको उपमा रिलेट कर सकते हैं. शब्द भी रिलेटेड टू साउंड एंड अर्थपट्टी इट्स काइंड ऑफ नॉलेज बाय व्हिच वन एक्चुअली ऑब्टेन्स एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पोस्टुलेशन और प्रिजम्पशन. सो राइट आंसर वुड बी अनुपलब्धि. दिस इज द राइट आंसर, जहाँ नॉलेज गेन किया जाता है, प्रेजेंट नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट्स उसके थ्रू. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजनिंग. द रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये फॉल्स है, बिकॉज व्हेन रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन, ये तो मतलब पार्लियामेंट में भी नहीं है, प्लस कोई भी स्टेट लेजिस्लेटर भी नहीं है. लेकिन असम में फॉर इंस्टेंस जो गांव पंचायत या जिला परिषद होता है, उसमें 33% रिजर्वेशन है, बाकी कुछ स्टेट्स में भी है. तो यह दिया है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर में अगर ये बिल पास किया जाएगा कि 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, इसको लाइक इट डजंट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये लेकिन फॉल्स है. इसको इट नीड्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट.
with special majority. तो ये assertion गलत है. Then political parties contesting election can allocate 33% of seats they contest to women candidate without any constitutional amendment. लेकिन अगर if any political party or all political party wants to give 33% of seats to women to contest, then they can give. It doesn't need any constitutional amendment or bill pass, etc. It doesn't need any formality. Like any political party like Congress or BJP or Aam Aadmi Party, they can just give their seats to 33% of women. It's up to them. Like if any party does this, then it doesn't need any constitutional amendment. But अगर रिजर्वेशन करना है तो it needs to follow, or the parliament needs to go through some procedure. constitutional amendment भी चाहिए होगा, फिर assent of president भी चाहिए होगा, then it will go to Supreme Court. So it's a big process, massive process actually. But political parties, if they want, then they can give. So this is the right answer. Like option reasoning is actually right. So right answer would be option D, that is assertion 1. Assertion is false but reasoning is true. Next question, it was very actually easy DI question. Class 5 boys girls दिया हुआ है, 6 7 कितनों ने पास किया ये दिया हुआ है, 8 9 10 सब दिया हुआ है. तो 18 to 22 क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है. इन विच क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ है? तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज क्लास 8. यह आप देख सकते हैं 60 90, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स का. पास यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है. सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज क्लास 8. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लास 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच क्लास इज द रिजल्ट ऑफ बॉयज़ लेस देन एवरेज रिजल्ट ऑफ द गर्ल्स. दैट मीन्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट मीन्स विल हैव टू डू द एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेटेड रिजल्ट निकालना होगा. मतलब पहले हमको गर्ल्स स्टूडेंट सबका एक्यूमुलेशन करना होगा. लाइक फॉर इंस्टेंस ये गर्ल्स स्टूडेंट जितना है 60 70 60 60 80 60 सबको कैलकुलेट करके होता है 390. तो इसको डिवाइड विथ 6, तो रिज़ल्ट आएगा 65. तो 65 के नीचे कौन सा लड़कों का रिज़ल्ट का सबसे 65 के नीचे कौन है? तो बस ये 40 है. तो राइट आंसर इज क्लास 7. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज यह दिया हुआ है कि एवरेज रिजल्ट ऑफ द गर्ल्स, एवरेज रिजल्ट है 65, और इन विच क्लास इज द रिजल्ट ऑफ बॉयज़, कौन सा 65 के नीचे है, दैट मीन्स 40 इज़ द लेस. सो यही 40 इज़ द लेस. तो ये बस क्लास 7 का बॉयज़ का रिजल्ट है 40. तो यही है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पेयर ऑफ क्लासेस आर द रिजल्ट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन इन्वर्स रेशियो. इन्वर्स रेशियो मीन्स ऑपोजिट है. फॉर इंस्टेंस क्लास 6 और क्लास 9 का इन्वर्स रेशियो में है, बिकॉज लाइक क्लास 6 का बॉयज़ का रिज़ल्ट है 80, और गर्ल्स का क्लास 6 का गर्ल्स का रिज़ल्ट है 70, और क्लास 9 का बॉयज़ का रिज़ल्ट है 70, और क्लास 9 का गर्ल्स का रिज़ल्ट है 80. तो ये इन्वर्स है ना, तो यही है राइट आंसर. इन्वर्स रेशियो में कौन सा क्लास का है, पेयर में है क्लास 6 और 9. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच क्लास इज द रिज़ल्ट ऑफ गर्ल्स. यू कैन जस्ट वॉच द मतलब टेबल, you can pause and watch the table and do the math. So next question is in which class is the result of girls more than the average result of the boys. तो एवरेज निकालना है. एवरेज लड़कों का एवरेज सबको कैलकुलेट करके होता है 430. इसको अगर 6 से डिवाइड किए तो 71 पॉइंट समथिंग होता है. तो 71 पॉइंट समथिंग के नीचे मतलब रिजल्ट ऑफ गर्ल्स मोर कौन किसका 71 से ज़्यादा है लड़कियों का. तो यहाँ अगर इफ़ यू लुक एट द टेबल देन
71 के नीचे बस 80 यही है। तो लड़कियों का क्लास 9 का लड़कियों का बॉयज़ का एवरेज रिजल्ट 71 के ज़्यादा है, दैट इज़ ओनली 80। 70 नहीं होगा बिकॉज 71 ज़्यादा है ना, तो इसीलिए 80 सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर इज क्लास 9 गर्ल्स, क्लास 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लास 9। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, इन विच क्लासेस आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कौन कौन क्लास का है? दैट मीन्स दोनों मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों का पास सेम है, तो ये कौन सा क्लास का है? लेट मी शो यू, आंसर इज ऑप्शन बी, लेट मी शो यू 6, 8, 9। 6, 8, 9 ये है आपका 6 देन 8, 6, 8 और 9, बिकॉज 80 + 70 इज इक्वल टू 150, देन 90, 60 इज इक्वल टू 150 और 70, 80 इज इक्वल टू 150। बाकी का 70, 60, 130 होता है, ये नहीं होगा। देन 460, 100 ये भी नहीं होगा। देन 86 इक्वल टू 140 ये भी नहीं होगा। तो आइडेंटिकल है क्लास 6 150, क्लास 8 150 और क्लास 9 150। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड साइबरनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कौन? नॉर्बर्ट विनर। नॉर्बर्ट विनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन। ये कहाँ यूज़ होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एग्रीकल्चर में भी होता है एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, वेस्टलैंड डेवलपमेंट इसमें भी होता है, डैम में होता है। दीज फ्लाई ऐश आर यूज्ड टू बिल्ड डैम्स ऑल्सो, ब्रिक इंडस्ट्री में तो होता ही है। ये चारों राइट आंसर है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, in the two sets given below, set 1 indicates methods of teaching and set 2 provides the basic requirement for success effectiveness। तो मैच द टू सेट्स, तो लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग से कौन सा मिलता है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज आइडियाज़। तो ये अगर मिल गया तो बाकी सब मिल जाएगा, दैट इज सी विथ 2। तो C2 इज़ ओनली विथ ऑप्शन बी। तो आपको अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग पता है तो पूरा आंसर पता चल जाएगा, मतलब कोड पता चल जाएगा। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट टू सी अदर ऑप्शंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट भी मिला लेते हैं, ए का 5 दैट इज टीम बेस्ड इंस्ट्रक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। जो लेक्चर का टॉपिक होता है उसका भी होता है, तो यू कैन जस्ट चेक ऑन द कोड्स with the option set 1 with set 2, then discussion in group which is use of teaching aids and procedure, then programmed instruction matches with small step presentation with feedback। तो ये 25th question। So these are all 25 questions of part 1 of this video। बाकी 25 questions we'll discuss in the next video। आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक चाहिए तो ऊपर दिए हुए लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पार्ट 2 का बाकी 25 क्वेश्चन हम वहाँ डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अगेन टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू वांट मी टू करेक्ट एनीथिंग देन जस्ट यू कैन just write it on my comment section and say so। Thank you।